Aligning with the India's Make in India, Self-Reliant and Make for the World initiatives, India is rapidly heading towards being the self-reliant country in defense manufactures. DD India's Yogesh Kumar Sheetal reports. India inaugurated a major indigenous artillery shell manufacturing facility in Ahilyanagar district of Maharashtra on Saturday, marking a significant step towards boosting indigenous defense production. The facility, which has been set up with an investment of 1,000 crore rupees and spread across 200 acres, has the capacity to manufacture up to 5,155 mm artillery shells annually, making it the largest private sector unit of its kind in India. On this occasion, Union Defence Minister Rajnath Singh said that India will emerge as the biggest exporter of arms in another 2 decades, with strong commitment on Make in India. जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे, और हमारी सोच का नतीजा आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह करना चाहती हैं, यानी कि हम डिफेंस सेक्टर में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं, और केवल अपनी पहचान बना नहीं रहे हैं बल्कि अपनी पहचान को बढ़ा भी रहे हैं। The project has been completed within a year and is based entirely on indigenous technology and raw materials. The complex will also house manufacturing units for rocket launchers, long-range rocket components, drones and electronic testing systems, further strengthening the country's defense production ecosystem. Chief of Defense Staff General Anil Chauhan underlined the changing dynamics of traditional battlefield. आज की सभा में बैठे हुए लोगों में काफ़ी लोग को ये एहसास होगा कि युद्ध कला और युद्ध पद्धति, इन तीनों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर आज केवल मैन पावर, कन्वेंशनल वेपन्स या प्लेटफॉर्म सेंट्रिक ऑपरेशंस पर आधारित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिस्टम्स, ड्रोन्स, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस भविष्य के बैटलफील्ड को एक निर्णायक रूप दे रहे हैं। This facility will focus on manufacturing explosives such as TNT, RDX and HMX, with an annual production capacity of 20,000 tons of TNT, which is expected to be among the largest in both government and private sectors. Importantly, Indian defense exports increased from less than 1,000 crore rupees in 2014 to 38,424 crore rupees in 2025-26 fiscal year, and India now exports defense equipment to more than 80 countries. Indian defense production rose from around 46,000 crore rupees in 2014-15 to over 1.5 lakh crore rupees by fiscal year 2024-25, with major boost to indigenous production. India is steadily reducing dependence on defense import. With advanced indigenous technology, the country is not only creating a robust infrastructure in defense sector, but also ensuring national interest. With my colleague, I am Yogesh Kumar Sheetal reporting from Maharashtra for DD India.